Next question on admission of partners. See, each and every question touches a new point. So सारे questions को time देके आराम से समझो, because if the concepts on admission are not clear, आगे retirement and death है, and then आगे आपका रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो सब इसी कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंडेंट है. सो पे अटेंशन. रजनीकांत एंड देवानंद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. मीन्स ओल्ड रेशियो आपको दे दिया, रजनीकांत एंड देवानंद 3:2. इनको ऐसे बोलते हैं हम आर और डी. ओके, द बैलेंस शीट ऐसा, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व, व्हाट इज जनरल रिजर्व? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्नीचर स्टॉक दिया है, डेटर्स लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, बैंक बैलेंस दिया है. ओके, ऑन 1/4/2016 दे एडमिटेड मिथुन, एम बोलते हैं, दे एडमिटेड मिथुन फॉर 1/5 शेयर, तो उसका शेयर 1/5 है. ओके, ही शुड ब्रिंग 25,000 एज गुडविल एंड 2 लाख एज कैपिटल. कैपिटल लाने का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख एंड गुडविल, सी यहाँ बैंक है, सो से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ओके, एंड गुडविल का एंट्री 25,000 एज गुडविल आया अंदर, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 25,000. देन उसके बाद क्या, गुडविल क्योंकि कैश के अंदर आया है, सो इम्पोर्टेंट रेशियो कौन सा होगा? सैक्रिफाइस रेशियो. सो 1/5 न्यू पार्टनर का अलग से शेयर दिया हुआ है, मीन्स ओल्ड रेशियो विल ओनली बी द सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि अलग से न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया. सो गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital in sacrifice ratio will be your goodwill का entry, and that is old sacrifice ratio भी 3:2 ही होगा. ये अभी देखेंगे. depreciate furniture and stock, so furniture and stock पे मार्क करो, एडजस्टमेंट है. RDD should remain as it is, so debtors को as it is डाल दो. Now point number 3, very important. The capital account of partners should be adjusted in new profit sharing ratio. Means new PSR निकालना पड़ेगा आपको, and through bank, यानी प्लस माइनस जो करना है. लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था लोन अकाउंट से, अभी करो बैंक अकाउंट से. सो लेट्स ट्राई दिस. 3:2 इज आपका ओल्ड रेशियो. 1/5 के लिए न्यू पार्टनर आया है, सो रिमेनिंग कितना शेयर बचा? 4/5. 4/5 में से आर और डी को लेना है, सो 4/5 इसमें से लेना है. किस रेशियो में? 3:2 में. सो इंटू 3/5 इंटू 2/5. 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5. That comes up to 12/25 and 8/25, and इसका 1/5 so है. So equalize the denominators. 25 आएगा, so 12:8:5, 5 1s are 5, so 12:8:5. New profit sharing ratio is 12:8:5. अब देखो उन्होंने क्या कहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो पहले देखो, हमेशा जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट कि इनका कैपिटल मत बेस लो, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल का बेस लो. 5 है और उसका कैपिटल कितना है? 2 लाख फॉर कैपिटल. सो 5 के लिए कैपिटल है 2 लाख, राइट. सो 8 के लिए कितना होगा और 12 के लिए कितना होगा? सो फॉर 8, 2 लाख divided by 5 into 8. So the capital comes up to 3,20,000, and 2 lakh divided by 5 into 12. So the capital comes up to 4,80,000. Now this is my
रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो सीधे से मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मुझे ये क्लोजिंग कैपिटल डाल देना है, राइट। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है आपको एंड क्लोजिंग कैपिटल आपको ये डालना है। बैलेंस जो भी है एडजस्टेड थ्रू बैंक क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। सो अभी तक हमने सिर्फ वर्किंग किया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 480, 320 और 2 लाख को क्लोजिंग कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जस्ट पुट इट एंड देन वील स्टार्ट विद द मेन सोल्यूशन। ओके, सो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस विच आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड दैट कम्स अप टू 4,80,000, then 3,20,000 and 2 lakh. Okay, now let's start. ओपनिंग बैलेंस हमारा रजनीकांत एंड देवानंद R&D 2,20,000 एंड 1,60,000। सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लेके जाओ 2,20,000 एंड 1,60,000। ओके, क्रेडिटर्स 30,000। सो देखो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में ले लो क्रेडिटर्स 30,000। बिल्स पेएबल 15,000 विदाउट एडजस्टमेंट, सो बिल्स पेएबल एज इट इज इन द न्यू बैलेंस शीट 15,000। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, that is old profit sharing ratio, that is 3:2। so 36,000 को लेकर जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व एंड हाउ मच इट विल बी 21,600 एंड 14,400। See, maybe for some students you will have to view the videos 2 times, 3 times, तब समझ में एकदम तरह आ जाएगा और वो बैठ जाएगा। बट आई अश्योर यू बुद्धि में बैठ जाएगा। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज, आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सी फर्नीचर के अंदर एडजस्टमेंट था, देन स्टॉक के अंदर भी एडजस्टमेंट था और डेटर्स एज इट इज रखने को बोला था। सो फर्नीचर 30,000, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड स्टॉक एट द रेट 10%। सो डेप्रिसिएट कर रहे हो, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कुछ भी बोल लो, उसके अंदर जब एसेट की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं तो लॉस है। तो लॉस कौन सी साइड में आएगा, लॉस ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। सो डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, 30,000 का 10% 3,000। सो योर एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हाउ मच 3,000। एंड बैलेंस शीट में आओ, फर्नीचर इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट 30,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन 3,000। सो आउटर कॉलम में 27,000। ओके, एंड नाउ स्टॉक पे भी सेम एडजस्टमेंट 31,000 इन द इनर कॉलम एंड डेप्रिसिएटेड। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, सो लॉस हो रहा है या एक्सपेंस वो सब डेबिट साइड में आएगा और इनकम या गेन्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में होंगे। सो 31,000 इंटू 10% 3,100 लेस 3,100, 31,000 minus 3,100 that comes up to
27,900. ये भी हो गया. RDD should remain as it is, means debtors भी वही 3 lakh and RDD as it is 5,000 less करो, so 2,95,000. Now बैंक बैलेंस ओपनिंग लो तो या तो टी छोटा सा बैंक अकाउंट बना दो या प्लस माइनस करते रहो टू फाइंड द क्लोजिंग बैंक बैलेंस. सो ओपनिंग बैंक बैलेंस इज 1,05,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकेंड डन. नाउ ये पढ़ो, ही शुड ब्रिंग 25,000 एज गुडविल. एंट्री क्या है? गुडविल के लिए पैसा अंदर आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 25,000. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 25,000. ओके. एंड अभी कैश आया है, सो इट इज केस नंबर 1. सो सैक्रिफाइस रेशियो काम आएगा. दैट इज योर ओल्ड रेशियो ओनली इन दिस केस. So goodwill account debit to old partners capital means by goodwill sacrifice ratio that is 3:2 में ये goodwill 25,000 को distribute करेंगे. That is 15,000 and 10,000 and 2 lakh for his capital. So entry will be cash account debit टू कैपिटल. यहाँ बैंक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो कैपिटल के लिए ही इज गेटिंग 2 lakhs. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय बैंक. हाउ मच? 2 lakhs. Okay. Now point number 3, most important point of this question. The capital account of partners should be adjusted in the new profit sharing ratio through bank accounts. Okay. तो हमको पैसा लाना या निकालना है, जैसे भी हमको वो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है. सो लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट. डेबिट साइड इज हायर मीन्स लॉस है. टोटल करो 6,100. 6,100 कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट से न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं. सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर और डी को जाएगा इन द ओल्ड रेशियो 3:2. दैट इज 3,660 एंड 2,440. ओके. So partners capital account debit to revaluation or to profit and loss adjustment, कुछ भी बोल लो. So R and D का 3,660 and 2,440. Okay. So this is done. Closing capitals को हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं. इतना ही रखना है कैश से एडजस्टमेंट करके. So R का 4,80,000. D का 3,20,000 एंड M का 2 lakh. So the total comes up to 10 lakhs. Okay. Now let's see कि क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल का हायर है या डेबिट साइड. सो आर का देखते हैं. डेबिट साइड इज हायर मीन्स 4,83,660 इज द टोटल. 483,660. ओके. सो टोटल में 483,660. सो बैलेंस उन्होंने बोला है बैंक अकाउंट से एडजस्ट करने को. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट एडजस्ट करो तो 4,83,660 minus 2,20,000 minus 21,600 and minus 15,000. So that amount comes up to
2,21,000 and 60, 2,27,000. So 227,060, 227,060. Okay, and next total लो आप D का 3,22,440. 322,440 minus 1,60,000 minus 14,400 and minus 10,000 comes up to 1,38,040. ओके, एंड M के तो बेस पे ही सारा हमने कैपिटल निकाला है, तो इसका टोटल विल बी सेम 2 lakhs and 2 lakhs. So bank account debit to R's capital to D's capital means वो पैसे लाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये आर्स कैपिटल और डीज कैपिटल अमाउंट ऐड करो 2,27,060 and D's capital 1,38,040. So इन सबको ऐड करके what we get as closing bank account balance is 6,95,100. Okay, this is your closing bank account 6,95,100. So ये बैंक अकाउंट के क्लोजिंग में आ जाएगा 695,100. लाइबिलिटी साइड का टोटल लेते हैं 10 lakhs plus 30,000 plus 50,000, 10,45,000. Okay, now take the total of the assert side and that comes up to 10,45,000. ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, सबसे पहले पार्टनरशिप का जब एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, चेक करो बैलेंस शीट में गुडविल तो नहीं है. नहीं है मतलब अपने आप ही केस 1 या केस 2 हो जाएगा. ओके, केस 1 होता है जब कैश लाता है, सीधा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, जनरली थर्ड स्टेप आता ही नहीं इसके अंदर. सो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. अब यदि कैश नहीं ला रहा है गुडविल के लिए मीन्स क्या है, वी विल रेज द गुडविल एंड राइट ऑफ द गुडविल. उसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो काम आता है. सो वी हैव ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेनिंग सम और द अदर कॉन्सेप्ट. सारे एडमिशन के क्वेश्चंस गो थ्रू, आगे बहुत फायदा मिलेगा.